Yes, yes, Nata sir. Yes, yes, Nata sir. Okay. So, thanks for attending the call at short notice. We are very sorry for giving such a short notice. Uh, Hope you understand that we are keen to go live on 15th. Unfortunately, last week 5th, we couldn't do because HQ wants some changes. That's why we couldn't go live last week Monday. We addressed the concern from HQ. System wise, we made some slight changes. So today's objective is to tell you what you need to do from today till 14 as part of the go live preparation. And then what is the changes that HQ asked us to do in India? Jignesh? Yes, yes, Nata sir. Yeah, So, please. Can you make it गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या है कि हमने आपको मीटिंग के लिए शॉर्ट नोटिस में इनवाइट भेजा था और आप सब यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। तो खूब खूब धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पर हमने आपको रिक्वेस्ट भेजा था और आप ज्वाइन हो गए हैं। थोड़े चेंजेस है एचक्यू की साइड से, तो वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए हमने मीटिंग रखा है ये। तो नटा जी आगे आपको इसके लिए बताएंगे। Okay. So first we will go into the go live preparation because that is more important. Then we go into the changes. Yeah. अभी हम क्या है कि गो लाइव के प्रिपरेशन के लिए आगे बात करने वाले हैं, उसके बाद में हम चेंजेस के लिए बात करेंगे। Okay. Uh, so, Jignesh, can you see my screen? यस यस नटा। Okay. So there are 3 points that I want everybody to understand. So from 15th onwards, this is your production URL. So this is a place you please bookmark in your browser, Chrome or whatever browser you are using, Internet Edge or whatever browser you are using. So this is where you can log in into GWS. Yeah. हम गो लाइव के प्रिपरेशन के बारे में अभी आपको बता रहे हैं। तो क्या है कि पहला जो है ना, वो हमारा लाइव का यूआरएल है। तो वो आप कोई भी ब्राउजर है, क्रोम, मोजिला, जो भी आप यूज कर रहे हो वहां पर आपको क्या है कि हिट करना है। तो क्या है कि हमारा लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगा। Okay. So when you click the one, you have to do two activities. So the activity number two, this is what listed here, and we will also send you this is already in your SharePoint that everybody can access. So Rizwanji also already sent the details. So the same thing is also available here. So this is the document that Rizwan also indicated in the WhatsApp. So if you open this, you will see the same one. What you need to do, you try to log in with your distributor ID. If your distributor ID able to log in and you can see a screen like this, okay, you can able to log in, then your action, no action required from you. If you have not received the OTP in your email and mobile, you have to click the change email and mobile and then set your new email and mobile, upload the PAN copy. Then from Enagic side, we will approve your credentials. Then you can try to log in. So the first step for you, try to log in with your existing distributor ID. You will receive a 1TP. If it is successful, it is done. If it is not successful, you click this change email phone, register your new email and phone. We will reflect your new email and phone in the production system. Then you can use that after you get the approval email from Enagic India, you can start using the system. Yeah, go ahead, Jignesh. तो जैसे ही हमने आपको बताया कि यूआरएल है लॉगिन के लिए, वो आप हिट करोगे तो वहां पर आपको लॉगिन आईडी में डिस्ट्रीब्यूटर पहला ऑप्शन है लॉगिन विथ ओटीपी। तो उसमें क्या है कि आपको लॉगिन आईडी पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपको ईमेल और मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे। अगर आपको ईमेल या मोबाइल में ओटीपी नहीं मिल रहा है तो नीचे लिंक दी गई है, चेंज ईमेल स्लैश फोन नंबर।
वहां पर आपको क्लिक करना है तो एक नया पेज ओपन होगा। उसमें क्या है कि आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पान नंबर और पान इमेज की कॉपी और डालना है और उसके बाद में सबमिट करना है। तो क्या है कि ये एनर्जी की जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें वो चेंज हो जाएगा विद इन 1 बिजनेस डे। तो उसके बाद एक क्या है कि आप लॉगिन विद ओटीपी वाला ऑप्शन यूज कर पाएंगे और आपको है ना ओटीपी अपने नए ईमेल और मोबाइल में मिल जाएगा। And Jignesh, you can also tell this if you don't communication यस, from. एक दिन में क्या है कि वो कम्युनिकेशन ईमेल भी आपको सेंड हो जाएगा कि आपका ये नया ईमेल और मोबाइल नंबर है वो सेट हो गया है, अब आप लॉगिन स्क्रीन यूज कर पाओगे। Okay. And because और the next one, because some people have a problem in receiving OTP, we have also given an option to log in via a password also. But in order to use the password, first you have to set up your email and mobile, means you should be able to receive OTP via email and mobile. So first complete that process. Then you can click the set up a password. So after that password, you can set up your new password by inputting your email and mobile. So the system, if the credentials are correct, it will allow you to set a password. And thereafter, you can log in with your password. You don't need to receive OTP via email and mobile, at least for the login. This is only for a worst case that if at all you cannot log in via OTP, you also given an option to set your own password and log in via password also. Yeah, Jignesh. तो सेकंड, पहला ऑप्शन जैसे हमने आपको बताया कि लॉगिन यूजिंग ओटीपी, दूसरा ऑप्शन हमने पासवर्ड का भी दिया है कि आप अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन कर पाओगे। पर उसका प्री रिक्वेस्ट क्या है कि आपको अपना पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि नीचे हमने ऑप्शन दिया है वांट टू सेटअप अ पासवर्ड, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वो क्लिक करोगे एक पेज ओपन होगा, वहां पर आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। तो क्या है कि हमारी सिस्टम में मोबाइल और ईमेल के साथ वो वैलिडेशन होगा और मैच भी होगा कि ये सिस्टम में वो डेटा फाउंड है या नहीं है। अगर वो डेटा गलत है तो वहां पर नोटिस आ जाएगी, आपको चेंज ईमेल और पासवर्ड चेंज ईमेल और फोन करना पड़ेगा। अगर सब सही है तो आपको एक ओटीपी मिलेगा, ओटीपी आपको डालना है और पासवर्ड नहीं डालना है। तो ऐसे ही आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा और बाद में आप लॉगिन यूजिंग पासवर्ड के साथ लॉगिन कर पाओगे। Okay, so the first you have to set up your email and mobile. If it is correct, then you can set up a password. यस, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको अपना ईमेल और मोबाइल सेटअप करना है। तो क्या है कि आपको ओटीपी ये नया वाला जो भी आपने ईमेल मोबाइल डाला है वो वहां पर आएगा। तो क्या है कि आप उसके साथ पासवर्ड सेट कर पाओगे। Okay, and from May onwards, we are planning to make both password and OTP mandatory. But first 3 months, you can use either one to log in. ओके, मे के बाद हम क्या करने वाले हैं, पासवर्ड मैंडेटरी करने वाला है। तो आपको क्या ओटीपी मैंडेटरी करने वाले हैं। तो क्या है कि आपको पासवर्ड के साथ ओटीपी भी डालना पड़ेगा। पर करंटली हमने ये दो ऑप्शन दिए हैं, उसके साथ आप लॉगिन कर पाओगे। This is also some people asked us that they are not receiving OTP. Because of that, we have given the password option also. क्या है कि कई सारे कस्टमर ऐसे वो कर फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसको ओटीपी नहीं फाइंड हो रहा है। तो इसलिए हमने ऑप्शन दिया है कि आप पासवर्ड के साथ भी लॉगिन कर पाओ। तो क्या है कि आपको लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। Okay. So please complete this before 14th February, so that from 15th February you can start introducing the new prospects. ये है ना, 14 तारीख के पहले आप सब कंप्लीट कर लेना। पासवर्ड वगैरह जो भी आपको सेट करना है, ईमेल मोबाइल नंबर चेंज करना है प्रोडक्शन सिस्टम में। तो क्या है कि 15 तारीख के बाद आप लॉगिन कर पाओ और नई एप्लीकेशन प्रोसेस कर सको। Okay. So now I'm going into the delta changes, what HQ asked, how we are changing it. अभी क्या है कि हम जो डेल्टा चेंजेस हुआ है, जो एचक्यू ने हमको बोला है करने के लिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। Okay. So I'm going to show that. One second. So this is the delta changes HQ instruction. The Rizwan ji also sent the PDF. So if you click that link, you can see this document.
So now I'm going to open that. अभी क्या है कि हम डेल्टा चेंजेस जो भी है पीडीएफ वो ओपन कर रहे हैं। रिजवन जी ने जो भी आपको लिंक सेंड किया है वहां पर भी ये पीडीएफ अवेलेबल ही है, तो वहां पर से भी आप देख सकते हो। Okay, let's come to my browser, it's going for task. Okay, you can see my the delta changes summary, right? यस 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 नटा। So there are, if you remember the GWS, we are having 4 steps: introduction, payments, permanent ID creation or KYC creation, and KYC and order confirmation. So each of the steps, what is the changes, I'm going to explain. Jignesh. अभी क्या है, आपको जीडब्ल्यू सिस्टम के बारे में पता है, तो उसमें क्या है कि 4 स्टेप है। इंट्रोडक्शन पहला स्टेप, दूसरा है पेमेंट कंप्लीट करना, तीसरा है परमानेंट आईडी क्रिएट, और चौथा स्टेप है केवाईसी एंड ऑर्डर कंफर्मेशन। तो उस चारों स्टेप में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं अभी। Okay. So the training that you had till last week, we had a concept called processor. So processor can introduce a sponsor and enroller with the prospect. So not only we are given option to all the 3 stakeholders, either a processor or a sponsor or a enroller can log in and then can choose the sponsor and enroller when they introduce a new prospect. But in the new system, HQ want that only enroller and immediate sponsor can bring a new prospect. They don't want processor concept. Yeah. तो अभी तक आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें क्या था, प्रोसेसर कॉन्सेप्ट था। तो प्रोसेसर ही एप्लीकेशन प्रोसेस करता था, और वहां पर आप स्पॉन्सर और एनरोलर की डिटेल डालकर करता था। और उसमें के बाद क्या था कि जो परमानेंट आईडी क्रिएशन है वो प्रोसेसर, स्पॉन्सर, एनरोलर कोई भी लॉगिन करके कर सकता था। अब नई सिस्टम में क्या है, एनरोलर और स्पॉन्सर ही नए बंदे को इंट्रोड्यूस कर सकेंगे, स्पॉन्सर कॉन्सेप्ट नहीं है। It is because the other country distributors asked for a similar request. So HQ, don't want to give this as an exceptional approval to India. इसमें क्या है कि दूसरे सब कंट्री है ना, उसमें भी सेम चीज फॉलो हो रही है। तो एचक्यू चाहता है कि बाकी के जो कंट्री फॉलो कर रहे हैं वही इंडिया भी फॉलो करे, इसलिए वो प्रोसेसर कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहता है। Okay. Uh, but they aware of the problems in India, so we also allowed to have some solutions for that. और एचक्यू है ना, उसको पता है कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने क्या है, एक एक्सेप्शन केस दिया है कि जो हम फॉलो कर सकते हैं। Okay, so you read all the content. I will just quickly explain that assuming that we have a line like this, in the old system, anybody can log in, like A, B can log in and then make C as a sponsor, D as B as a enroller and introduce a prospect E. But in the new system, only enroller or sponsor can create a line. Means assuming that B is a enroller, he log in and by default he become enroller. He cannot propose CD as a enroller. He can propose CD as only a sponsor. So enroller can log in, he becomes enroller by default, or the login person become enroller by default, and he can propose anybody under him as a sponsor in introducing E. Alternatively, when D is logging in, then he becomes not only sponsor and also enroller. So for this introduction, when the immediate sponsor logging in, he becomes enroller as well as sponsor. Let's say when B logging in, then he has an option that B can be enroller, B can be a sponsor, or B can be B only B can be enroller, C and D can be sponsor. But when D logging in, only D can be enroller and D can be sponsor also. So in this, the governance is ensured that always the line is created between enroller, immediate sponsor, and the purchaser. Maybe Rizwanji, it's better you explain this. Yes, Nadasan.
तो कहने क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, पहला जो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट था, जैसे एग्जांपल दिया है ABCDE, इसमें क्या होता था, कोई भी जो लाइन में है, एक ही लाइन में कोई भी बंदा जाके लॉग इन करके आईडी क्रिएट कर सकता था। अगर आईडी C D को, मतलब अगर आप डी को लेके आ रहे हैं तो ए या तो बी या तो सी, कोई भी एज अ प्रोसेसर आईडी क्रिएट कर सकता था। ये था पुराना कॉन्सेप्ट जो हम लेके आए थे। लेकिन HQ के अभी चेंजेस की वजह से अभी नया क्या होगा, अगर आप कोई नया प्रोस्पेक्ट या तो नया कस्टमर लाएंगे, स्पॉन्सर बंदा या तो एनरोलर, दोनों ही कोई एक रजिस्टर कर सकता है। अगर उसमें एनरोलर है तो एनरोलर को लॉग इन करके आईडी क्रिएट करना है। अगर सिर्फ स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर एज ए लॉग इन करके आपको आईडी क्रिएट करना है। पहला क्या था, प्रोसेसर कॉन्सेप्ट कोई भी लाइन में कर सकता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी जो नया कॉन्सेप्ट February 15 से है कि स्पॉन्सर या तो एनरोलर, सेल्स फैसिलिटेटर को ही आईडी लॉग इन करके कंप्लीट करना है, तभी आईडी क्रिएट होगा। Okay. क्लियर? नोट। Thanks, sir. Okay. The next one. So now what we learned from lot of your group leaders that they are doing the processor concept for several reasons. And one of the reasons is that they want to reduce the no payment IDs and other, unethical use of IDs, along with other actions that, they are doing as part of the processor. So HQ understand this. So what HQ has come up, asked IT to come up with the solution. Like in the previous design that you were trained till last week, we initially create a temporary ID. During a temporary ID, A can introduce B, B can introduce C, C can introduce D without even A, B, C, D completing the payment. But when you create a permanent ID, the A should have completed, B should have completed, C should have completed. And like your paper process, the processor can also change the line because initially it is only a draft. When you really create the permanent ID, that time, depending on the payment completion, you can also change the line. Let's say that B and C has not completed, you can put D under A. This was done in the paper side, even though it is not correct, but technically in the paper process, it is allowed. So we also initially designed with that assumption that people will follow all the moral and ethical stuff. So they won't do this, line change as per the payment priority. But in order, to start with the existing process with less change management, we got an alignment with your distributor top group that within 3 months, they go to the global model. Uh, but the HQ said, no, right from the day one, they cannot allow, somebody to change the line based on somebody is making a payment earlier or later. But at the same time, they also understand the pain in the people, just logging in and getting introduced without actively engaging in the business. So unintentional use is also there. So to get a balance, what in the new system we are doing, A can introduce B only when A made a payment. So even in the introduction or temporary ID cases, we are stopping the inactive IDs or the potential inactive IDs with two exceptions. Maybe no, it's also Rizwan ji, you explain. So until this point. ओके। तो पहले कैसा है, पुराना GWS सिस्टम जो हमने डिजाइन किया था, अगर आप पिक्चर देखेंगे ABCDE, ये इंट्रोड्यूस कर सकता है बी को, बी कर सकता है सी को, सी कर सकता है डी को, डी कर सकता है ई को, बिना पेमेंट के, बिना इमीडिएट पेमेंट किए इंट्रोड्यूस कर सकता था, जो कि हमारा नॉर्मल पेपर वर्क होता। और परमानेंट आईडी क्रिएट करने से पहले आप स्पॉन्सर चेंज या तो लाइन ऑफ चेंज कर सकते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट में जो स्टार्ट नहीं हुआ था उसमें आप लाइन चेंज या तो स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर पेमेंट। अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हो, किसी ने बीच में पेमेंट नहीं किया, ऊपर वाले ने पेमेंट कर दिया, तो वो हिसाब से आप स्पॉन्सर चेंज करके आईडी को परमानेंट कर सकते थे। ये था GWS का ओल्ड डिजाइन। लेकिन HQ को लगा कि ये सही नहीं है, स्टार्टिंग से ही सही से सब कंट्रोल में आना है। इसके लिए क्या किया है कि GWS का जो नया डिजाइन है उसमें क्या किया है, अगर आप ये है, ये इज ए पेड आईडी,
तो आप बी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और बी पेड है तो सी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर पे नहीं है तो वो आगे इंट्रोड्यूस नहीं होगा उसके, और हम आगे बताएंगे। नाटासन। Okay, so there are two exceptions because we know that people who are registered the paper application till 14th February, Enagic needs some time to verify that they really paid or not. You have to provide the UTR number. We have to verify the bank statement with the UTR number. It takes around 2 to 3 weeks. So we have given a breathing time that if the customer is registered before 14th February, as long as his ESID is created, even we don't check the payment completion. So we just allow the A, let's say A is registered on 14th February. We don't check his payment completion. We allow him to introduce B. And the second one is Tokurai. So we will explain in the Tokurai one. But now the first exception is that for the people who are registered before 14, uh, uh, whether he has completed a payment or not, irrespective of the situation, we are allowing him to introduce. But he is registered from new GWS from 15th. It is mandatory for him to complete the payment in the pre-temporary ID. We don't even expect a permanent ID, KYC and other things. In the temporary ID, he should have been completed. Or if he registered before 15th, we allow him. And we allow till only 8th. From 9th March, whether it is before 14th February or after 15th February, everybody has to come under paid ID only. Exception is Tokuri. Yeah, Rizwanji. अभी आप देखेंगे जो भी आईडी 14 फरवरी तक क्रिएट हुआ है, 14 फरवरी तक क्रिएट हुआ है, हमको थोड़ा टाइम चाहिए कि पेमेंट चेक करने के लिए, एटलीस्ट 3 वीक्स तक टाइम चाहिए चेक करने के लिए। तो हमने क्या किया है, जो भी आईडी 14 फेब तक क्रिएट हुआ है वो बंदा क्या है, किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है नए सिस्टम पे 14 फरवरी तक। अगर कोई बंदा जीडब्ल्यूएस पे लॉग इन किया है 15 के बाद, तो उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, उनको एक्सेप्शन नहीं है। जो भी पुराने तौर पे रजिस्टर करते हैं अप टू 14, वो लोग आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और मार्च 8 तक ही टाइम है, जो भी आप पेमेंट किए नहीं, मार्च 8 तक आपको टाइम है, उसके अंदर आपको सब कंप्लीट करना है। 8 तारीख के बाद सारे आईडीज जीडब्ल्यूएस में पेड आईडी के तौर पे रहेगा, एक्सेप्ट टोकरे को छोड़ के। Thank you. Okay, so now, before we go to Tokurai, we also tell you that in the month end, definitely because we are allowing only enroller and sponsor to introduce, the processor concept is reduced. It may slow down the ID creation because people with correct information, has to log in and then introduce a new prospect. So we are aware of the ground level problem. So what we are doing, sorry. So what we are doing, we are, oh God, just 1 second. Somebody keep calling me. In the month end process, we already designed that, the sales count, whether it is, 1 second. So we already designed that your deposit date, actual deposit date in the bank. In case of credit card, the system knows the transaction days. In case of virtual bank, the system knows when you transfer the funds, whether you transferred the funds through internet banking or you transferred the funds through Google Pay or other, mobile apps. The system knows the exact date of transfer. And the check means the system knows exactly when Enagic got the cash or money, funds from the check. So based on that, the Japan system, will consider the sale count as a last month or current month. So this is already in place. On top of that, because of the delay with the new process, that ID creation may be slowed down because of the processor concept is removed. We are also planning to come up with some kind of workaround for the February and March, that even if you delay the submission by 1, 2, 3, 4,
we can find a good solution that you don't get penalized because there is a new, change management. But it is something we have to do things at the right way. This is what HQ is telling. Initially, we were planning to do 3 months later, but now they want this to be done on the day one. So the first 2 months, we will come up with a strategy where the 6A rank people, they don't deny because, some slowness in the first 2 months. So we are giving you some time. That first 2 months, you get adjusted to the new process, and we take care of your any concerns like 6A rank up and whatever, the loss that you are encountering because there will be a delay in ID creation. And before 25th of February, we will exactly tell you how we are going to support. One thing we already designed, like based on the transaction date, the Japan will consider the sale on last month or this month. Along with that, we also planning to come up with some more solutions, which you will hear from us in the next 2 weeks. Because still, the month and 2 weeks away from us. Yeah, Jignesh. Not a Rizwan is explained. That is good, I think. Yeah, For sorry, the Rizwan, sorry. हाँ ओके ओके नरसन ओके। I'm sorry. तो मंथ एंड का जो प्रोसेस है हमारा, जहाँ पे एप्लीकेशन फ्लो बहुत ज्यादा है, 300 से 600 एप्लीकेशन आते हैं, तो जिसे ये अभी प्रोसेसर कॉन्सेप्ट जो स्टॉप हुआ है, और जहां पे एनरोलर या तो स्पॉन्सर को ही आईडी लॉगिन करना है, इसके वजह से क्या होगा, थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में डिले होगा। क्योंकि हमने 600-700 एप्लीकेशन आते हैं, अभी कोई भी लॉगिन कर सकता था, लेकिन अभी नए सिस्टम में स्पॉन्सर या तो एनरोलर को ही लॉगिन करना है, तो इसकी वजह से थोड़ा डाउन हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसकी वजह से ना अगर कोई बंदा 6 से बन रहा है तो उसको हम लोग देखेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर वो पेमेंट करता है वाया क्रेडिट कार्ड या तो वर्चुअल अकाउंट, तो बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन डेट देख के हम लोग सहायता कर सकते हैं, और चेक पेमेंट का डेट से भी हम लोग सहायता कर सकते हैं कि वो बंदा 6 से बने, उसमें कुछ दिक्कतें ना आए। तो ये जो है फरवरी मार्च तक आपको ऐसे ही 2 महीने तक ऐसे ही हमको करना पड़ेगा, और नया सिस्टम फरवरी 25 को हम लोग बताएंगे आपको ये आगे कैसे जाएगा, प्लानिंग में है ऑलरेडी। तो डेट के हिसाब से पेमेंट कंसीडर करेंगे। 6 से अगर क्वालिफाई हो रहा है पेमेंट के वास्ते या तो अप एंड डाउन हो रहा है, तो हम लोग सपोर्ट के लिए खड़े हैं, तो कि इसकी वजह से 6 को कुछ नहीं होगा। तो ये हम लोग 2 महीने तक करेंगे, उसके बाद प्रोसेस सेट कर देंगे, तो सब उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नॉट ए सर नेक्स्ट। Thank you. Okay. And this is also it is applicable only for the first day. So let's assume that you are sending an application on 14th February midnight. The GOC may process on the next day, maximum within a day. So that time on 15th, if you log in, your ID is not registered in Enagic system, neither in the GWS. So it won't allow you to log in or start introduction. So just wait for one day. We already requested GOC to complete everything by 15th night. So on 16th onwards, the person can log in, set his email, mobile, or password, and then start the introduction. So only for one day, for the people who sent an application on 14th, they can start only from 16th. Yes, Rizwanji. हाँ, जो भी एप्लीकेशन जीओसी को भेजे हैं या तो भेजने वाले हैं 14 तक मिडनाइट तक, तो हम उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं, एक दिन वेट करें, क्योंकि जीओसी को सारा आईडी क्रिएट करना होता है। अगर ऐसा करेंगे तो अब आगे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी 14 तारीख को आईडी रजिस्टर्ड होता है, 16 तारीख से 16 फरवरी से आप आईडी आगे लॉग इन कर सकते हैं। तो एक ही दिन आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वेट करें। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आईडी आगे आप नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से जो भी 14 तारीख तक भेजा है, 15 को एक दिन वेट करें, फिर 16 से स्टार्ट करें। ठीक है, सिर्फ एक ही दिन के लिए है। ओके Okay, good. Okay, now this is, we request all of you not to bombard us with questions. Request, sincere, kind request. Your 6A2-4 knows the process really well. And we, already discussed in several discussions, several times with them. In summary, what we can say, the HQ want to make the process transparent, because right now it is not transparent. It is known only to certain people.
Whether it is true or not, we are not going into that discussion. But as per the HQ global policy, they want to make this process or the Tokarai process as transparent as possible. At the same time, HQ also understand the concerns from the distributors top line that everybody currently in India misusing this Tokurai that buy one get one free. So how do we prevent such unintentional use? So we are even today we are discussing that how do we balance that everybody can become a Tokurai or a deserving guy, not everybody. A deserving guy can become a Tokurai without even funds, he can start the business. But at the same time, how the upline interests are protected, because in India, you do have a lot of people who use it for the wrong intention. So this we are debating. The HQ and the 6A2-4 are brainstorming now. But tentatively, probably we may be going the approach that I am showing here on this page. It is exactly same like what you have, in the paper process. Only some additional things. Like whenever a paid ID comes, you can read, right? Or I can make it big. Okay, so I'm making it big. So whenever a paid ID comes, he can have two options. He can introduce the prospect as a Tokurai or bring him under a normal process like paid process. So everybody will be given a choice that whenever you see a prospect, depending on the credentials of the prospect, that he is a deserving guy, he will not do anything unethical. So after you, the sponsor or an enroller, identify that there is a potential guy, so you can request a Tokurai. Then what we are doing in the system, we are qualifying through 6A, enroller and immediate sponsor. All the three has to discuss and then say, yes, this guy is really a potential guy. He is not misusing the system. How he misused the system, we are leaving it to you to decide. That all the three can approve in the system. So initially, A request, I want to introduce B as a Tokurai. Then 6A, enroller, and the A itself, the immediate sponsor itself, approve the Tokurai in GWS. Then the detailed KYC of Tokurai is entered by the immediate sponsor A, or even B can enter. Then the B, will be allowed to introduce one more prospect, C, and he has to complete the payment. When C complete the payment, temporary ID, the B can create the permanent ID of his prospect C, or C himself can create the permanent ID. And once the permanent ID of both the 100% payment is completed and permanent ID are created, the Tokurai ID and his prospect ID C are created in the Enagic system. So the Tokurai then has to confirm his KYC to get a commission, and the buyer has to confirm his KYC to get the shipment. So the cycle goes. So here, the objective, what we are trying to achieve is that anybody, a paid sponsor, can introduce a deserving Tokurai, but the upline, whether it is 6A or who, still we have not defined, that person and the enroller and the immediate sponsor, all three stakeholders has to ensure that he is a deserving candidate, that he is not misusing it. Thereafter, it's a system procedure. Like right now, you are sending an application, two applications together. So instead of sending, we fit the current process with additional approval in the system side. Right now, you are getting an approval outside the system, 6A approval. Future, we will also have the accountability that this guy is, approving it, because he knows that the new prospect will not do anything unethical, or the immediate sponsor is not doing anything unethical by bringing a deserving prospect called B. Rizwanji, yes. यस सर। टोकरे जो है कॉन्सेप्ट बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को पता भी नहीं है।
तो एचक्यू का पॉलिसी क्या बोलता है टोकरे के बारे में, कि ये जो टोकरे जो है ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे, यानी सबको दिखे कि ये टोकरे का प्रोसेस क्या है, कुछ हाइड एंड सीक नहीं है। एचक्यू चाहता है कि जो भी डिजर्विंग है टोकरे के लिए उनको मिलना चाहिए, तो प्रोसेस उनको एकदम ट्रांसपेरेंट रखने के लिए टोकरे जो है इंडिया में है और बाकी वर्ल्ड में भी है। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, टॉप लीडर्स बोल रहे हैं कि इनका टोकरे का आईडी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मिसयूज भी कर रहे हैं। तो देखेंगे वो कैसे हम वो प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो जो डिजर्विंग टोकरे हैं उसको हम दिए, और जो मतलब जो ये सब प्रैक्टिस ऐसे करते हैं उनको कैसे प्रिवेंट करें आगे देखेंगे हम लोग, उसमें कुछ लाएंगे सुधार। और जो आपने एग्जांपल ये अभी देख रहे हैं, तो उसमें कैसा है, अगर कोई पेड बंदा है, पेड आईडी है जिसका पेमेंट किया मशीन है, वो लेके आ सकता है पेड आईडी को। एक दूसरा ऑप्शन, जो बंदा पेड आईडी है वो लेके आ सकता है टोकरे को। जैसे ही टोकरे वो आता है उसमें क्या है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, वो सेल को भी साथ में लेके आना है। तो वही कॉन्सेप्ट इधर है, थोड़ा चेंजेस किया है कि बी भी आएगा सी भी आएगा, लेकिन परमानेंट आईडी क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही टोकरे के नीचे जो सेल है वो पेमेंट कंप्लीट करता है, तो दोनों बी और सी का आईडी परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद टोकरे और सेल जो है वो केवाईसी करके आगे कमीशन का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, टोकरे अप्रूवल के लिए सिक्स से स्पॉन्सर या तो एनरोलर को डिस्कस करके डिसाइड करके अप्रूवल देना है कि ये जो टोकरे बंदा है ये डिजर्विंग है, इसको देना है या नहीं देना, ये तीन डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से टोकरे आईडी क्रिएट होगा सिस्टम पे विथ सेल, तो वो आगे बिजनेस कर पाएंगे। और क्या है, फ्यूचर में देखेंगे कि हम लोग अगर कुछ शिक्षे या तो ऊपर से मतलब हो नहीं रहा, तो स्पॉन्सर अगर स्पॉन्सर कर सकता है। अगर स्पॉन्सर को पता है कि ये बंदा डिजर्विंग है, कुछ आगे मैल प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, कुछ ऐसा वैसे नहीं करेगा, तो वो हिसाब से हम स्पॉन्सर को दे सकते हैं कि वो टोकरे क्रिएट कर सकता है। तो सेम पेपर जैसा ही सिस्टम पे हम लोग लेके आ रहे हो। Thank you, sir. So additional things, we don't need to go into the detail. Like the approver, if the 6A is the same as the enroller and also sponsor, only one approval is required. We don't, send three approval. And also the C cannot be created as a Tokure. Like Tokure under Tokure is also prevented. And also when the B cancel his Tokure status, he can bring one more Tokure. So all the system related validation to bring the process under system, we will consider when we, develop the system. And the timeline is that we are planning to complete the development before 10th March. And you will have the training preparation and video, before 15th. And we will also take the opinion from 6A2-4. We already got, the opinion. Again, we will do the final briefing. Then, the distributors are also expected to plan some necessary change management. And the current timeline is that from 8th April, this process will be available in the system. So there is no hide and seek, as Rizwan said. So everything will become more transparent. Yes, Rizwan. यस सर। अगर आपका सिक्स से एनरोलर स्पॉन्सर एक ही बंदा है तो ये एक टाइम अप्रूवल काफी है टोकरे के लिए। अगर अलग अलग है तो सबका अप्रूवल चाहिए। टोकरे अगर बंदा है तो नीचे वो और किसी टोकरे को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वो कब इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो अगर अपना टोकरे आईडी जो है आपने कैंसिल करके नॉर्मल आईडी को कन्वर्ट कर दिया, तो वो केस में नीचे वो किसी को इंट्रोड्यूस कर सकता है। 6A2-4 से भी आई मीन अपने सारे अपने लीडर से भी इसके बारे में बात हो रही है, अप्रूवल रिजेक्शन टोकरे के बारे में कुछ सॉल्यूशंस के लिए। इसका टाइमलाइन है, हमारे सिस्टम साइड में भी काम है, बिफोर 10th ऑफ मार्च तक 2024 तक हम बताएंगे। ट्रेनिंग वीडियो और इसका जो भी है 15 मार्च तक हम देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिकेशन मीटिंग ब्रीफिंग 22 मार्च से लेकर 27 मार्च। डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो प्लान नेसेसरी चेंज, ये तो ऑलरेडी बताया। लेकिन इसका क्या है, जीडब्ल्यूएस ऑनलाइन टोकरे जो है 8 अप्रैल से ना, 8 अप्रैल 2024 से सबके लिए अवेलेबल रहेगा, सबको पता रहेगा, सब सिस्टम पे आ जाएगा। 8 अप्रैल के बाद जीडब्ल्यूएस में आपको टोकरे का भी सिस्टम सब ट्रांसपेरेंट रहेगा, सबको पता चलेगा। ठीक है। Okay, good. Thank you. So now, coming to the current process, like till
April 8th, what is the process that you need to follow? It's follow the current process, only one change. What is a change? I'm going to explain. So right now, let's say you have the three guys. A is a paid ID, B is a Tokurai, C is a Tokurai is buyer, K is a 6A. In that case, what you are doing, the application for B and C are sent to GOC. The on paper the 6A approves, and on paper the 6A and the B or A ensure that C has made a payment. But Enagic, we don't know what is the payment you made because you are paying without even ID. So the reality is that you send the application of both Tokurai and his buyer in one go to the GOC. GOC create the ID in Enagic system. Then the subsequent process, the B as a Tokurai and C as a normal distributor, gets into the picture. Shipment and other things happen. In the after GWS, what we are telling, please send the application to GOC like what you are doing. Please get approval from 6A like what you are doing. Only one change we are expecting you to follow. Ask C to make the virtual bank transfer, account transfer to the 6A account. You can do via internet banking or Google Pay or whichever, mobile app, UPI app you have. So ask him to transfer to this account and then send the application to GOC. And GOC will register like today, B as a Tokurai, C as the normal distributor. And later, the Enagic India will provide you the further information that if they are not getting the payment confirmation, they will reach either the 6A or the immediate sponsor A to understand whether the payment has been made or not, or ask for a payment reference. So what we want you, even now, I believe many of you are first getting the payment, then only you are sending an application. So follow the same process, but ask the prospect C to make a payment to the 6A account. That is the only change. All other processor remains same, like today. Hi, Rizwan ji. टुकड़े का प्रोसेस बोलता हूँ आगे। के है इधर जो पेड आईडी है, ठीक है, के जो है एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है और 6A भी है, तो वो बी और सी को लेके आ रहे हैं, बी यानी टोकरे और सी यानी उसके नीचे का सेल। तो आपको क्या करना है, दोनों एप्लीकेशन साथ में, टोकरे और सेल का एप्लीकेशन एक ही शॉट में आपको आईडी क्रिएट करने के लिए जीओसी को ईमेल भेजना है। कैसे भेजेंगे, जो टोकरे का फॉर्म होता है एज इज आपको फॉलो करना पड़ेगा पेपर वर्क, जहां पे आपको 6A का अप्रूवल लेना है, ठीक है। 6A का अप्रूवल लेने के बाद आप दोनों साथ में टोकरे और सेल का एप्लीकेशन आप जीओसी को भेजेंगे आईडी क्रिएट करने के लिए। इसमें एक चेंज क्या है, जो पेमेंट आप करते थे कोटक के बैंक में एनर्जिक का, वो अभी आपको नहीं करना है। उसके बदल आपको क्या करना है, 6A के अकाउंट में, आपको 6A का अकाउंट बोले तो कंपनी का ही अकाउंट है, वर्चुअल अकाउंट होता है। 6A कंपनी हम आप 6A को देते हैं, तो वो अकाउंट में आपको पैसे डालना है। ये जो टोकरे के नीचे जो सेल आ रहा है उसका पैसा वर्चुअल अकाउंट में या तो गूगल पे फोन पे पे करके आप डाल सकते हैं। एक ही चेंज क्या है, आपको 6A के वर्चुअल अकाउंट यानी वो भी कंपनी का ही अकाउंट है, उसमें आपको पैसे डालना है सेल का। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका टोकरे और सेल जो है दो भी साथ में रजिस्टर हो जाएगा। अगर कोई पेमेंट का इश्यू आता है तो कस्टमर सर्विस एनर्जिक इंडिया का स्पॉन्सर को या तो 6A को या तो जिसने भी एप्लीकेशन भेजा है उसको कांटेक्ट करेंगे पेमेंट के लिए, ठीक है। Okay. Oh, sorry. One second. So everybody, aware Paytm situation. So as of today, the Paytm payment services, gateway services like what we are using in GWS is not impacted. You can click the Paytm and then pay using your debit card, credit card. Wallet you cannot use. Probably UPI also they are stopping, but credit card, debit card still it's available. In case the Paytm
the government stops Paytm by 29 February, you still have the virtual bank transfer. And we have also enabled the virtual bank via mobile apps like Google Pay, Phone Pay. We tested, it is working well. Last 2 weeks, both Irana and me were working on this topic. So it's working now. So don't worry about Paytm. You can transfer using the mobile apps. The credit card, we are also establishing the communication with the CC Avenue and also Kotak Bank to see that if Paytm's stopped by government, we can use the other payment providers. So credit cards also you can use. But as of now, there is no problem from Paytm. What we hear from them. But even if there is a problem, please transfer using virtual bank numbers. You can also use a mobile app, and we have created a small user manual. So please refer to the user manual. You can get all the detail how you can use a mobile app. तो Yes. यस यस, आपको सबको पेटीएम का इश्यू तो पता रहेगा। तो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से आया था, वो जो है पेटीएम बैंक्स के लिए था। 29 तक वो स्टॉप करने वाला है। लेकिन एज पर हमने जो पेटीएम से बात किया, उन्होंने बताया कि ये पेमेंट्स का कुछ स्टॉप होने वाला नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो अवेलेबल है पेमेंट के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास वर्चुअल बैंक अकाउंट है जहां पे आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और वर्चुअल बैंक में भी हमने ये तक वर्कआउट किया है कि उसमें भी आप मोबाइल ऐप यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे भी चल जाएगा वर्चुअल अकाउंट में। तो अगर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है पेटीएम की तरफ से, अगर कुछ आगे प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास वर्चुअल बैंक है, फोन पे, गूगल पे सब है, उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए हमने सीसी एवेन्यू और कोटक बैंक से भी पेमेंट गेटवे बात चल रही है। ठीक है, उसके अभी हम आगे फ्यूचर में अपडेट बताएंगे। फिलहाल के लिए पेटीएम की तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता है तो वर्चुअल बैंक हमारे पास रेडी है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, वर्चुअल अकाउंट, एनईएफटी सब अवेलेबल है। ठीक है, आपको कैसे पेमेंट करना है वर्चुअल अकाउंट में, वर्चुअल अकाउंट में आपको कैसे गूगल पे, फोन पे करना है, उसका हमने मॉड्यूल भी बनाया है, आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये मीटिंग के बाद जो भी हमने पीडीएफ वो ट्रेनिंग लिंक में भेजा उसमें अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। Okay, thank you. Jignesh, you please ask Ravi to put it in the SharePoint. That one, I think it is still not there. Which one letter? The mobile app payments. Okay, just a minute. Yeah, you please tell him, to put. And then send it to Rizwan also so that he can publish, in the WhatsApp. Okay, so now I'll go to the one. So the login password, we have already explained you that because some people have a problem in receiving the OTP, and also we don't know how many people will be using in parallel. So the server sometimes can keep it in the queue. So to avoid all these problems, we have created a password option also. So you can set up a password, log in via OTP or log in via password. But future, from May 2024, it will be multi-factor authentication. So you need to use both your password and OTP. But for the first 3 months during transition time, you can use either one. Yes, Rizwan ji. यस यस सर, जिसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। लॉगिन के लिए आपको ओटीपी से लॉगिन करना है। समटाइम्स क्या हो सकता है, सर्वर इशू के मतलब आप ओटीपी मतलब एक ही मोबाइल नंबर या तो ओटीपी मतलब ज्यादा यूज करते रहे तो क्या है, समटाइम्स सर्वर में वो क्यू में आ जाता है। तो ये इशू हो सकता है। इसकी वजह से हमने क्या किया, पासवर्ड पासवर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप लॉगिन ओटीपी से कर सकते हैं, लॉगिन या पासवर्ड से कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। फ्यूचर में आगे 3 महीने बाद हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखेंगे जहां पे दोनों भी होगा, ओटीपी प्लस पासवर्ड। तो ये फ्यूचर में रहेगा आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तब तक के लिए नॉर्मल चलता रहेगा दोनों। Okay, now we go into the timeline. So until 14, you can use the old paper process. From 15, you will be starting the new system with the new process that we trained you. And if the customer is created on 14 and he has not made a payment, the order will not be available in GWS. So you ask him to complete the payment with the old approach.
whatever you told him earlier. And you send the UTR number once he complete 100%. So there is no change in as is process for the people who were registered before 14th. And we continue this process till March 8th. And after March 8th to 13th, we will migrate all the unpaid customers from January 1st, 2023 into the new system new system GWS. And after we migrate on the old orders, unpaid orders to the GWS, you don't need to worry, even if you paid only 10% or 15%, as long as you have a transaction history, you can upload the transaction history using a manual payment option. You can put the, let's say, POS, he made a payment or he made a payment in the bank transfer. You upload the transaction evidence using a manual transaction in the GWS. Within 1 or 2 days, Enagic will approve by referring to the bank statement. And if you want to make further payments to complete the order, he can use the new process. So for the customers who were registered until February 14, till March 8, he can continue to complete his payment in the old approach. If he completed the payment, it is done. If he has not completed the payment, even March 8, we will migrate the orders, and old payments can also be entered into the new system, and subsequent pending payments can also be done in the new system. So we have 1 more month for old people to complete the payments by the old approach. Yes, Rizwanji. गो लाइव और बैकलॉग का प्लान है। एप्लीकेशन 14 तारीख तक जो भी भेजने वाले हैं, 14 तारीख तक, February 14, 2024 तक जो भी भेजेंगे एप्लीकेशन, आप लोग जीओसी को ही भेजना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। और पेमेंट कैसे करना है, आप पहले जैसे करते थे वैसे ही करना है आपको पेमेंट। जो भी एप्लीकेशन 14 तारीख तक रजिस्टर होते हैं, आईडी क्रिएट होने के बाद जब आप पेमेंट भेजते हैं कस्टमर केयर सर्विस पे, हम प्रोसेस करते हैं, वही प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन जो भी 14 तारीख तक रजिस्टर होते हैं, ठीक है। 15 तारीख से जो नया हमारा प्रोसेस है, उसमें आपको हमारा जो जीडब्ल्यूएस का प्रोसेस है, 4 स्टेप प्रोसेस, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि इंट्रोडक्शन, पेमेंट, केवाईसी क्रिएशन और केवाईसी एंड ऑर्डर कंफर्मेशन। ये जो 4 स्टेप है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। बात करते हैं बैकलॉग्स। बैकलॉग्स यानी जो भी आईडीज आपने जनवरी 1, 2023 से लेके 14 फरवरी 2024 तक क्रिएट किया है, वो आईडी का क्या, वो आईडी का पेमेंट। Hello, Rizwan. I think your voice is down. वेंकट इज कॉलिंग मी ऑन टीम्स। Okay. Yeah. सो पुराना पेमेंट क्या होगा, आपको टाइम दिया जाएगा 8 मार्च तक, जो भी आपने पेमेंट किया है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, मतलब 8 मार्च तक आप पुराना प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, पेमेंट करके आपको भेजना होगा, हम उसको प्रोसेस कर देंगे। 8 मार्च के बाद आपको नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सारा डेटा माइग्रेशन करने वाले हैं फ्रॉम 9 to 13। उसके बाद सारे पेमेंट जो भी आपने किए सब जीडब्ल्यूएस में ही करना पड़ेगा। तो आपको 1 महीने का टाइम है, जो भी आपने पेमेंट किए हैं पुराना अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही डेटा माइग्रेशन हो जाता है 9 to 13, सारा आपको फिर न्यू सिस्टम पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। डन। संदीप रूटीन आएगा, ओके। Okay. Uh, so the last topic we have already explained you. In the next 2 days before February 14, please register your email and mobile if old registered details are incorrect, and also set up the password. So from the distributor, your group, please do both the activities without fail. Yes, Rizwanji. February 14 तक आप ये जो प्रोसेस है कंप्लीट करें, रजिस्टर करें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल। अगर नहीं किया तो पासवर्ड सेटअप करें, 2 दिन का टाइम है। रीसेट करें, रीसेट योर ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टीजीएस। तो February 14 तक आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो है February 14 तक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वेंकटास कॉलिंग। Hey, I'm in a call. I'll call you back. I'm in a call. Okay. So this is what we would like to tell you.
Rizwanji, do we entertain any questions now, or we ask them to go into the documents and then we can answer the questions? Uh, Sir, let them go through this document, the Mm, link which we have sent. Let them go through the video. mm, As planned, day after tomorrow, we'll have the question answer session. Because once they practice and change this email ID, mobile number, see the video, mm. then they will be able to ask more questions. Okay, good. So yeah, we We'll can. explain them once. Mm, ये क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग बाद में रखेंगे, जैसे मैंने फ्लायर पे ऑलरेडी दिया है। क्वेश्चन आंसर सेशन सेपरेट से करेंगे, क्योंकि कैसा है, आपको पहले ये सब प्रैक्टिस करना है 2 दिन आपको, मतलब February 14 तक आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो सब चेंज करना है। और जो लिंक हमने दिया है ना, उसमें आप जाइए, वीडियो अवेलेबल रहेगा, शाम को वीडियो चेक करें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स ये हमने आपको प्रोवाइड किया है अभी सारे उसमें अवेलेबल है, तो एक टाइम आप उसमें गो थ्रू करें। उसके बाद कुछ भी डाउट्स होगा ना, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन सेपरेटली रखा है, उसमें हम लोग आपको अलाउ करेंगे जो भी आपका डाउट से बात करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज ये पहला सेशन हुआ है, फिर 2 बजे को सेकेंड सेशन रहेगा। अगर आपने मिस कर दिया हो, अगर डाउनलाइंस आपके मिस किए, तो प्लीज वापस आइए। अगर आपको समझ में आया, फिर भी आप और समझना चाहते तो फिर से ज्वाइन करें, ठीक है। अगर ग्रुप में और टीम्स में बोले कि सेकेंड सेशन होने वाला है आज, अगर आज अटेंड नहीं कर पा रहे तो कल 2 और सेशन है, उसके बाद थर्ड सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो हिंदी में रहेगा सेशन और लास्ट तेलुगु में रहेगा, ठीक है। जो भी पार्टिसिपेंट्स है प्लीज फ्लायर को दिखेगा, फ्लायर में सारे डिटेल्स दिए हैं। तो 2 बजे फिर मिलते हैं सेकेंड सेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू। thank you all. Thanks all. ओके।